नमस्ते। आपका हृदय से स्वागत है। वे क्षण परम सौभाग्य के क्षण होते हैं जब कोई दिव्यात्मा हमारे साथ होती है, अन्यथा समस्त जीवन हमारा केवल निम्न ऊर्जाओं के साथ ही व्यतीत होता है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, बस किसी प्रकार से अपने जीवन को चलाने की भागदौड़ में, उसकी कवायद में ही लगे हुए हैं। लेकिन वे दिव्य आत्माएं जो अनंत अगोचर की यात्रा करना चाहती हैं और कर रही हैं, उनका साथ होना ये सबसे मूल्यवान बात है, क्योंकि एक जलता हुआ दिया ही बुझे हुए दिए को जला सकता है। तो आज हमारे सामने, हमारे साथ जो इस समय हैं, वे हैं एक जलते हुए दिए, प्रज्वलित दिया, ध्यान का दिया, ज्ञान का दिया, और उनका नाम है मिलोवन स्टेनकोव, फ्रांस के महान वैज्ञानिक और हिमालय के महान योगी। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा यह सुनकर कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हैं। ये विगत 30 वर्षों से, अर्थात पिछले 30 सालों से लगातार गहन हिमालय में जाकर 1 महीना साधना करते हैं और समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हैं। आप स्वयं अपने आसपास देखिए, हम अपने आप को भी देखें। हम केवल धन कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वह तपोभूमि हिमालय की, जहाँ पर पहुँच कर लगता है कि ये सारा संसार मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, उस ब्रह्म का साक्षात्कार हिमालय की उन उत्तुंग पर्वत शिखरों पर मिलोवन जी करते हैं। और उन अनुभवों को व्यक्त करवाने के लिए मैंने इनसे अनेक बार निवेदन किया, किंतु ये हर बार टालते गए। अंततोगत्वा इन्होंने आत्मा रीसेट पुस्तक की रचना की। वास्तव में ये ध्यान के बड़े सूक्ष्म और गहरे अनुभव हैं। आप सभी परिचित हैं, 2 वर्ष हो गए हैं इस पुस्तक को प्रकाशित हुए, आत्मा रीसेट। शुरू में इस शब्द से अनेक लोगों का तालमेल नहीं बैठा था। उन्होंने पूछा कि आत्मा कैसे रीसेट हो सकती है। हम फ़ोन को रीबूट करते हैं ना, तो ये आत्मा रीबूट है एक तरह से, आत्मा को फिर से सेट करना। कई बार फ़ोन हमारा हैंग हो जाता है, चलता नहीं, उसकी प्रणाली, उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, तो हम कहते हैं इसको सेट कर दो। बिल्कुल उसी रूप में हमारी जो आत्मा है, वह कई बार हमारे व्यवहार के कारण बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो जाती है, और उसको फिर से रीसेट करना, उसकी जो रीसेटिंग है वो इस पुस्तक में थी, आत्मा रीसेट। अब उसके बाद दूसरे अनुभव के रूप में इन्होंने जिसकी रचना की, आज जिस पर बात होगी, उस पुस्तक का नाम है आत्मा ब्लूप्रिंट। अब ये आत्मा ब्लूप्रिंट क्या चीज़ है, ये भी गहरी चीज़ है, इस पर भी बात होगी। लेकिन दोनों ही शब्द आप देखिए वैज्ञानिक शब्दावली से जुड़े हैं, आत्मा रीसेट और आत्मा ब्लूप्रिंट। आत्मा तो मूल वही है, लेकिन रीसेट और ब्लूप्रिंट 2 भिन्न शब्द हैं, और दोनों ही शब्द वैज्ञानिक शब्दावली के हैं। तो ये विज्ञान और अध्यात्म दोनों का संगम है, और ऐसा संगम दुर्लभ होता है। मैं इनको दुर्लभ महायोगियों में गिनता हूँ, क्योंकि इन्होंने संसार और अध्यात्म दोनों को समानांतर रूप से साधा है। जैसे भगवान कृष्ण थे, परम ऐश्वर्य के स्वामी और परम ध्यानी। कृष्ण यही तो हमें जीवन सिखा गए हैं कि तुम गहरे से गहरे ध्यानी बनो और बहुत उच्च ऐश्वर्य के साथ जियो, क्योंकि ऐश्वर्य ईश्वर से ही बना है, ईश्वर ऐश्वर्य का ही नाम है। तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना, दोनों पंखों से साथ साथ उड़ना, धन और ध्यान दोनों के पंखों से। तो उसी उड़ान पर ये मिलोवन जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। उन भक्तों के लिए बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है, सौभाग्यशाली क्षण है, जो इस समय इस स्थिति में हमारे साथ यहाँ पर इस सारे के सारे प्रसंग को सुन रहे हैं। क्योंकि होना कोई भौतिक उपस्थिति से होना नहीं होता,
आप इस समय जब ये सुन रहे हैं तो जो मानसिक उपस्थिति है वो आपको पुनः वापस यहाँ ले आएगी, बैक टू द फ्यूचर। फिर इसी कालखंड में आकर आप हमारे साथ उपस्थित हो जाएंगे। तो आज सबसे पहले जो पुस्तक है आत्मा ब्लूप्रिंट, ये अंग्रेजी में लिखी गई, इनको हिंदी तो आती नहीं, तो अब है कि जो हमारा हिंदी का पाठक है वह कैसे उन गहरे रहस्यों को समझे, तो उसके लिए इसका हिंदी में अनुवाद होना था। तो अनुवाद के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज के संस्कृत के आचार्य डॉक्टर अभय को चुना गया। डॉक्टर अभय अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी तीनों में दक्ष हैं, अच्छी पकड़ है तीनों भाषाओं पर। तो इन्होंने इस अनुवाद के साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। तो मैं कहूँगा अभय से कि वह बताए कि इस पुस्तक के लिए चुना गया उसको, तो सबसे पहले तो उसे लगा कैसा, और दूसरी बात उसकी अनुभूतियाँ क्या रही पुस्तक को अनुवाद करते हुए, क्योंकि साधारण पुस्तक तो है नहीं। इस पुस्तक के लिए, अनुवाद के लिए तुमको चुना जाना, यही एक बहुत बड़ी घटना है, और ये बड़ा संयोग से चुना गया तुमको, तुम्हें मालूम ही है। तो अब ये बताओ कि तुम्हारी अपनी अनुभूतियाँ कैसी रही इस पुस्तक का अनुवाद करते समय। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे ध्यानी योगियों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। और इस सानिध्य का एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि जहाँ व्यक्ति संसार में उलझ करके स्वयं को भूल जाता है, वहीं इन योगियों का सानिध्य पुनः पुनः मुझे अपनी चेतना से जोड़े रखता है। तो यह मैं परम सौभाग्य मानूंगा कि मुझे इस नहीं तुम्हें नहीं, अद्भुत, तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी को भी। जी जी, डॉक्टर प्रज्ञा, तुम दोनों ने मिलकर काम किया है। जी जी। और मैं एकदम से वो कहना भूल गया कि भाई तुम्हारी पत्नी का भी इसमें पूरा योगदान है, क्योंकि तुम दोनों का संयुक्त काम रहा। जी जी। और तुम दोनों ही संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के प्रकांड पंडित हो। तो डॉक्टर प्रज्ञा से भी हम बात करेंगे, पर पहले क्योंकि अधिक समय तुमने दिया है, तुम्हारे लिखे पर उन्होंने जो है ना संशोधन किया है। जी, तो तुम अपनी बात को बढ़ाओ आगे। बिना उनके सहयोग के तो यह कार्य कथमपि संभव नहीं था। हाँ। तो मैं अपनी अनुभूति यदि कहूँ तो सबसे पहले मुझे जो अनुभव हुआ इन वाक्यों को पढ़ते ही, मैंने प्रज्ञा जी से कहा कि ऐसी जो अभिव्यक्तियाँ हैं ये बिना किसी गहन ध्यान के अनुभव के नहीं आ सकती हैं। इन उद्गारों को प्रकट करने वाला व्यक्ति निश्चय ही ध्यान की गहराइयों में उतरा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ, कई ऐसी अभिव्यक्तियां आईं जिनका अनुवाद करते समय, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर टाइप करता हूं, तो मेरी अंगुलियां वहीं की वहीं रुक गई और मैं कई क्षणों तक, कई मिनट तक मैं इस बस एक कह सकते हैं कि एक अवाक हो जाना, अवाक, स्तब्ध रह गया। और मैं मनन करने लगा कि ऐसी अभिव्यक्ति कोई व्यक्ति कैसे दे सकता है। मानो ये अभिव्यक्तियां जैसे ही हमारे अंतस को स्पर्श करती हैं, वैसे ही मानो हम अपनी उस दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं। जहां हमारा जीवन अधिकांश समय में स्वयं के शरीर और मन के खेलों में ही बीत जाता है, वहीं ये जो अभिव्यक्तियां हैं ये हमें अपने वास्तविक चैतन्य से जुड़ने में सहायता करती हैं। बिल्कुल। दूसरा, यदि मैं इसे अपनी शिक्षा से संबंधित करके देखूं इन अभिव्यक्तियों को, तो क्योंकि आपने जैसा कि बताया, और मैं स्वयं संस्कृत मैंने पढ़ी है, संस्कृत को विषय के रूप में पढ़ा है, भाषा के रूप में पूरा। जी। तो इसमें वेदांत आदि दर्शनों का भी हमने अध्ययन किया है, सांख्य दर्शन का अध्ययन किया है, योग दर्शन का अध्ययन किया है। तो मैंने ये देखा कि इन दर्शनों में और विशेषकर वेदांत में जो बातें कही गई हैं, उन बातों को बड़े ही सूत्र रूप में, बहुत ही सरल रूप में और स्पष्ट रूप में मिलोवन जी ने अपनी अभिव्यक्तियों में प्रकट किया है। जैसा कि इनका एक वाक्य है
कि अस्तित्व का अनुभव चेतना का ज्ञान है। एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस इज नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, ये अंग्रेजी में इनका वाक्य है। तो यह वाक्य ही इस बात को दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसी वाक्य पर यदि अपना ध्यान केंद्रित करे तो उसे यह अनुभव होगा कि वास्तव में यह कितना गहराई से हमारे अंतर से जुड़ा हुआ है। वाक्य सुगंधित पुष्प है। जी, निश्चित रूप से। और इसी वाक्य से आप संपूर्ण वेदांत का सार समझ सकते हैं, क्योंकि वेदांत की अंततोगत्वा जो धारणा है, या हम ये कह सकते हैं उसका जो प्रमुख सिद्धांत है, वो यही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म स्वरूप है। तो इस बात को बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही सरल रूप में मिलोवन जी ने अपने वाक्यों में प्रकट किया है। इस चीज को भी अनुभव किया गया है कि इन्होंने देखो वेदों का अध्ययन नहीं किया इत्यादि, लेकिन फिर भी उनका पूरा का पूरा जो एक सार तत्व है जी, उसका जो अमृत तत्व है, उसकी जो सुगंध है, इससे क्या पता लगता है कि जो ज्ञान है उसकी कोई भाषा नहीं है जी। तो ज्ञान सिर्फ ध्यान के रूप में ही जाकर फलीभूत होता है जी। तो ये मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि हिमालय की उन गहराइयों में जिन ऋषि मुनियों ने जो ध्यान किया, जो अनुभव किया, वो तरंगों के रूप में तरंगायित होकर इनके हृदय में समाविष्ट हुआ और फिर इनके माध्यम से वो प्रकट हुआ। आपका कथन सर्वथा सत्य है, क्योंकि मैंने यही प्रश्न इनसे सीधा किया था। मैंने इनसे पूछा कि वेदांत दर्शन में ये सारे सिद्धांत वर्णित किए गए हैं। अच्छा। आपने सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है इस प्रक्रिया का वर्णन किया है, वहाँ आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का वहाँ वर्णन किया है कि जो ब्रह्म है वह आवरण के माध्यम से स्वयं को ढक लेता है और विक्षेप शक्ति के माध्यम से वह इस जगत को प्रकट करता है। मैंने साक्षात इनसे प्रश्न किया कि आपने यह कैसे जाना। हाँ। तो इन्होंने बड़ा ही सरल सा उत्तर दिया कि प्रकृति को देख करके। मैं इस बात को सुन करके दंग रह गया। उसके बाद इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन, इसका एक विवरण प्रस्तुत किया कि यह जो आवरण और विक्षेप आप वेदांत में देखते हैं, ये केवल वेदांत में नहीं है। इन्होंने फिर वैज्ञानिक तरीके से उसमें हमें बताया कि एटम्स के स्तर पर भी यही होता है कि एक वस्तु स्वयं को ढकती है, दूसरी उसको प्रकाशित करती है, उघाड़ती है। जी जी जी। तो इस तरीके से मिलोवन जी के जो वाक्य हैं वो न केवल आध्यात्मिक तत्व को लिए हुए हैं, अपितु उनकी वैज्ञानिक रीति से भी व्याख्या की जा सकती है। तो यदि कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाला व्यक्ति इसको पढ़ेगा, मुझे लगता है उसके हृदय में आध्यात्मिकता का प्रकाश होगा, और जो आध्यात्मिकता वाला व्यक्ति पढ़ेगा उसे अपनी आध्यात्मिकता को प्रमाणित करने के लिए कुछ वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हो जाएंगे। और तुम कुछ अपने प्रश्न भी लाए हो, लेकिन पहले हम इनसे इस पुस्तक की रचना से संबंधित जो गूढ़ बातें हैं वो पूछेंगे, और उसके बाद तुम अपने जो तुम्हारी जिज्ञासाएं हैं उनको रखना। मिलोवन जी, प्लीज टेल अस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा ब्लूप्रिंट। Let's start first with a short story about this object which is known in India as a Shankha, or symbol of creation. Coming to India for last 30 years, I was always facing this object everywhere in Indian culture and tradition. All ceremonies are starting with blowing the conch, Shankha. In Mahabharata and Bhagavad Gita, all wars are starting with Shankha. Yes, yes. And that intrigued me to look deeper into the story and history of this shell. As passionate by nature and professional by biology, it was always my interest to see and probe deeply
into the nature how it works. And this is one of the typical examples of construction that is made by nature. The snail, Indian Ocean snail, that lives in this structure, constructed it. And it has been instructed to produce it. Yes. So my question was, who instructed? Who instructed the snail with knowledge how to build up this object? And this is bring me to the point that everything is connected in this universe since it exists, as we know, and for many billion years, of course, and our planet is already 3.5 million years old. And this object appeared on the planet, this species, sorry, this, not this object, this species. Yes. The species appeared on our planet some 540 million years ago. And the concepts of that structure, we'll see, it's linked directly to us and to our existence. This is one of prominent example, but there is a few more examples even older than this one. As we know today, we are existing because we are breathing, and for our life we need oxygen. And oxygen appears on our planet only 540 million years ago. Before that was not oxygen on our planet, and all life was without oxygen, with carbon dioxide. Yes. And in the sea, in the oceans, appeared some million years ago the first Species. not species, bacteria, Okay. known as cyanobacteria, that started to produce oxygen in very small quantities into the ocean. And some 900 million years ago, what happened on the planet is a burst of oxygen. Okay. Because this bacteria has been multiplying, they have produced the oxygen. Oxygen start to create atmosphere of oxygen, but life still could not start because all oxygen went everywhere into space and not remained close to the earth. So what's happened is, when concentration of oxygen rose to about 30%, for our normal life in this air, we have about 20% of the oxygen, but concentration of oxygen has to rise up to 30% to create what we know ozone layer. Okay. Ozone layer is a layer of oxygen which protects the planet from radiation and allows the concentration of oxygen is constant, and this is the initial condition that life as we know it today is starting at that time, 540 million years ago. The plants started to invade the surface of the planet. The ocean life start to appear with species that produce this kind of shells, which is, it was possible only because of oxygen, because oxygen and then calcium and carbonate, they created the molecules, atoms of calcium carbonate. So this object is made of pure calcium carbonate. It's chemical reaction. So everything is designed. Yes. So everything has blueprint. Everything has blueprint. So all knowledge has to exist
the vision has to be exist, Yes. and then the knowledge has to be put into place, and so many experiments has to be done in order to perfect the species, to be able to produce the design which is beautiful, Yes. symmetric, aesthetic. Yes. And you can imagine that the snail lived inside is a living organism which has life and lived his individual karma, Yes, sir. Yes. fighting for the foods, looking for reproduction, and building up this. These Indian Ocean snails, they can live up to 15 years. Okay. Up to 45 years. They can live even up to 45 years. And the biggest shell that is recorded, it's between 10 to 15 kilograms. Oh. So this one is correspond to snail that lived 4 to 5 years and produced the shell, which is 750 grams. Okay. What is curiosity of this structure is that there is inside a spiral structure that snail didn't know that he's building. He has been instructed Yes, to build yes. it. And if so the structures, since that time, 540 million years ago, we had to see the species building the structures. This is one very evident one. This is the reason they call it the Shankha, or symbol of creation. And because of calcium carbonate appearing at the time, all sort of fish and animals in the sea that has a skeleton has been developed because of calcium carbonate. Calcium. Okay. And our existence as a human beings is thanks also to bones. Yes, Our bones. bones are a calcium and solid structure on which Skeleton. everything else, skeleton, which everything else sustain the organism and its functioning. So you can, through this you can see how everything is connected. And the curiosity is that there is a spiral inside, and when whoever imagined it and designed it have foreseen that the spiral, once the snail has died off, the spiral, when somebody like humans can blow through, only humans can do that, animals could not do it, blew through this Shankha, it produced the sound Yes. that you have heard at the beginning. What is interesting is that this type of structure, the spiral structure, linked to the production of sound, is also found in our inner air. Okay. Got it? Yes. Yes. So our inner air has a similar structure, spiral structure, with the cells that are sensitive to vibration of the sound. They can capture it. And what is more curious even, that this sense of hearing is the first sense that develops during embryonal development of the human being. No. After only 22 days of conception, the air has been developed, inner air has been developed. Okay. That means the fetus is able to perceive and sense the sounds. So through this you can see and conclude that we are living in intelligent and functional universe, which is reliable and sustainable, and which unfolds its capacity of creativity through creating different structures, including Yes, human yes. beings. And that leads to the conclusion that the purpose of any form of life, including our, is, and what we are living, is a shell.
Yes, of course. And when we talk about the human species, our purpose is not our individual life, but the structures we build. And if you look civilization, from ancient, they build the pyramids and all different type of structures, and our civilization, they build also the structures, the means of communication, all the infrastructure that allows species to live, and the structure is necessary to continue evolution of the species. Yes. So in any culture, the new generation, they inherit already the functional intelligent structure, which are structures of knowledge. Structures of knowledge. Yes, and this you can, from that perspective, you can conclude that everything we experience, everything we see, are just the different structures of knowledge. Yes, that's true. Yeah, Yes. these plants, these Yes. carpets, the house, Yes. everything is just a structure of knowledge. For anything, for any structure, first you have to imagine it, Yes. then you have to have desire to make it, Yes. and to put desire in place, then you have to make a plan. There's a blueprint, Yes. or design, Yes. or mapping. So this creation has a map, and it is in Atma, which is a consciousness. And that consciousness creates permanently, Yes. imagine and putting in place different structures through which its place. The creation is lila, as Yes. your Lila. Yes. your literature is repeating again and again. Yes. And all these different structures, including us, are just the platforms to express creative potential of consciousness, universal consciousness, and Brahma consciousness. So, on that level, in Atma, there is a blueprint for the creation. And that blueprint is inbuilt in each platform of creation, including the human platform. This is very exciting. Yes. It's very enlightening. Very interesting story, which Yes. just show that everything is connected. Yes. We are connected with everything, and everything is connected with us through consciousness and through the knowledge inbuilt into the structures. So basically, the Atma blueprint is just a spin-off or a byproduct of using Mahavakya. Yes. Experience of existence is Knowledge of consciousness. Yes, because by any experience, the knowledge of consciousness is revealed, and this type of experience is given only to this platform as a human being. Animals, they have no knowledge. They are not conscious, not aware of having experiences and having a knowledge of their own existence, which is the consciousness. So what is different from all other species and human, comparing to human species, is we got ability to think. We have thoughts. Animal has no thoughts. They behave by instinctive behavior to survival, to food, and for reproduction. Yes. The human beings, because we have ability to think, to collect the knowledge, to hear the knowledge, to use the knowledge, to record the knowledge, to build up the structures on the basis of the knowledge, and finally to transmit the knowledge.
So the whole Vedic tradition is transmitting of the knowledge to different lineages of ways of knowledge to different lineages of rishis, sages. Sapta rishis, Yes. and down to the nowadays to Eeshaan Rishi. He's also a sage. So I would Your like question, to. your Yes, I question, have please. few questions. So Only two. Not few questions. few. Then I would like to start with your first Mahavakya, that is experience of existence is knowledge of consciousness. So I would like to ask that how would human able to experience this existence in order to gain the knowledge of consciousness? What is the blueprint so that we can realize the whole existence in order to gain the knowledge of consciousness? That's my first question. Yeah. This is very good question. First of all, we start with Atma. Imagining, so the whole creation is imagination. Yes. As you know, in reality, this is illusion. Yes. We are sitting in the game in simulated reality. Jagan Mithya. Yes, in simulated reality. Yes. And in which we think. So this is when the blueprint, there is a trick in blueprint. In the blueprint is given the totality of creation with identification of all entities from atom to the universe, including the human beings. Yes. So they are all structures of knowledge in sequential expression, as we have explained it through this example. The Atma, Brahma, was just exercising his intelligence as his potential, creating different structures. We are the most sophisticated structure No. to which design, blueprint in Atma, saying to this species, I want to give capacity and possibility to think. Okay. And this is the thought is like a double sword. Okay. Yes. Okay, and because we have capacity to think, we use the thinking to grasp the knowledge, to use the knowledge like a knife, to discriminate, Okay. but also using that tool of knowledge and give us power. And thinking is identifying, and we get caught in identity problem, in creation of individuality. Individuality means undivided reality is individuality. So we are creating artificially division, duality, although the reality is non-duality. Yes. So this is the mistake we are making, and this mistake is programmed. Okay. Otherwise, we'll not live illusion and game of reality as we are living it. Okay. Is it just created for like to play a game? No, it is just It's like unfolding, you just said. unfolding potential, because unfolding potential. So let's say when the planet is created, the universe is created, Brahma, let's say, saying to himself, I want to create all different, to manifest all potentials, all my creative potential, Yes. everything I can imagine, I want to see it, I want to play with this, Yes. and I want to create beings on my like Yes. that will be able to have to reach the same level of knowledge as I have. Okay. So the Brahma is
is playing the Brahma show by It means himself. the creator is playing through its own creation. Exactly, yeah. So we are his creation, and we can realize that and accept, and because we are essentially Brahma. Wow. So this is just Brahma playing the game of Brahma in Brahma Yes, show. Leela Matram. Leela, yeah. It's Leela Matram, Yes, he said. yes. Wow. So that way. So this print, it is in everybody, and through the knowledge and dissolution of false identity with ego and mind, we can just realize that reality and just enjoying Yes. everything through perspective of knowledge, Yes. of consciousness. Okay. So each experience is a chance to grasp a new layer, new level of knowledge of consciousness. And this is how unfolding through each of us, through each platform, the potential of creative intelligence is unfolding all the time. So thoughts is an impulse of energy and creativity. Yes. And this is the Brahma impulse. I would like to ask one more thing, that as you said, we gain knowledge of consciousness. My We are question is, consciousness. yes, we are consciousness. But I want to ask that knowledge is based on our past experiences. Is this knowledge which is based on past experiences and the knowledge of consciousness, are these two different knowledges or are these same? First, we have to understand that every human being, whatever his level of understanding is, Yes. even a kid, Yes. when they start to identify themselves, Yes. everything we think about us is knowledge. We are individual in knowledge of ourselves. Yes, that's true. That's We're in our just a experience. knowledge. Yes. We have little knowledge or Vast knowledge. vast knowledge. Yes. We're just a knowledge. Okay. So, and this knowledge is accumulating and creating memories, and Akash is all memories. Akash is all memories. Akash is memory. And ether or Akash is just a memory. And this memory of the totality is available at any point of creation. Including this very moment. Okay. So you can access totality from any point of creation, at any point of creation, at any place, and any space. So all memories, Puranas, are available. It's like ocean of knowledge. We are living in ocean of knowledge, which is ocean of consciousness. And we are just a wave. Okay. We think we are individual, separate wave, but independent from the ocean, but we are just as much as the ocean itself. There is no difference. Yes, that is we are making artificial difference because of thoughts. I am the wave. And that is very interesting that you said ether or the Akash is the memory. Could you elaborate this term, that what is memory or smriti? Smriti means what? I was just like to, I'm curious about this. Yes. That level of information you can get at the point of neutrality. Okay. In your own literature is saying unmanifest, manifest, but between unmanifest and manifest, there is a point of neutrality which we can find in our normal functioning. A point of neutrality you can identify when out breath is completed, and before in breath is starting, there is a small pause. Yes. This is where yogis are using as a technique to focus and remain at that point of neutrality. And that point of neutrality, you are aware of both values, unmanifest and manifest. The
point of neutrality is by Nyaya like a lamp at the door. Okay. Okay. You have a lamp at the door. Yes. Yes. And you yes. open the door, and the same lamp Yes. is We light up lighting the, inside Yes. and lighting outside. That side. Yes. Okay. Yes. At that point, you are fully aware, Yes. and you can choose in which way unmanifest you want to manifest in Okay. Okay. and direct Now I and get direct. it. Now And I at get that it. point, you are a witness. Yes. It's like a Aatma treasure you can. Sakshi, yes. It's like a treasure you can get whatever you want. You are just observing. You just direct the flow. We just direct. Yeah, you just direct the flow. We direct the flow. You like let's say Yes. you open the door, Yes. and so many kids are inside, Yes. and all want to get out. Yes. And then you say, no, you have to put the shoes, you have to Yes. wear something, it's cold outside, you know. So Yes, that's yes, why yes. you are observing and not controlling, it's not kind of controlling, but you're just witness Yes. of what's going to happen, We are or just what might happen, Yes. and you can direct events the way you want it. We can channelize it. You can channel this, and you take responsibility for this. Wow. That's. And this is the reason I'm it is reliable and sustainable source of energy, information, of life, and of our well-being. This is the only sustainable source and reliable source. And the first authority when you are born is your mother. Yes. First authority. Wow. Your mother is giving you the knowledge of you, initial knowledge of you, saying, you are my son, and your name is Abai. And you will be the great man one day. Yes. Okay? So he gave you the basis to build up your identity on the basis of knowledge of experience of your body. You're moving, you're running, jumping, failing, crying, whatever happened. These are all experiences, and you think you are this body, you're this pain, you're this joy, you're this, you're that, and so on. Thank you, Milovan ji. It was such a enriching experience, and it was enlightening. And I would like to thank you and Eeshaan Mahesh ji that he gave us the opportunity to have a conversation with you. My pleasure. My pleasure.